Good morning, all and one present over here for this online guest lecture on the electric vehicles in India, prospects and challenges. It is being organized on the 10th of the November. I, Dhanashri Pore, welcomes all of you for this online guest lecture. For this event, we are having with us Professor Siddhant Gudhe. I just would like to introduce our guest for this one. He has completed the B.Tech in the Electrical Engineering from the Walchand College of Engineering, Sangli. Completed his M.Tech in the Power Electronics and the Power System from the Sardar Patel College of Engineering, Mumbai. Sir has also worked as a product design engineer at Rishabh Instrumentation Private Limited, Mumbai in 2014 to 2017. Also worked as an assistant professor in the Government College of Engineering, Amravati from the 2017 to 18. Also worked as an assistant professor in the Jagadambha College of Engineering and Technology from 2018 to 19. At present, sir is doing the PhD from the National Institute of Technology, Bhopal. So I welcome again all the students, the faculties for this online guest lecture for, on the electric vehicles in the India, prospects and challenges. So I request Siddhant Gudhe sir to please proceed for their lecture. Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Thank you for the introduction, ma'am. I have one to two doubts here. So, if I want to ask anyone questions in between the presentation, how should I do it? Hello. Hello. Could not get what you want to say. If I want to ask the question in between the presentation to the students, so how to do and how they will answer it in between the chats, or they have to they will answer it orally. First, to complete, we can proceed from the chat box. They will put their question, or you can also put your question in the chat box, so that they will answer in that way. Okay, so they will answer by typing. Yeah. Okay, so okay, welcome everyone. Now I will start my presentation. So we will start with electrical vehicles in India, prospects and challenges. Means what is the future of the electrical vehicles in India and what are the present challenges we are facing. So just tell me, is everyone comfortable in English? So I got the chat now. So you are comfortable in English, right? Okay. So two people have responded to me, yes. Otherwise, I can continue in Hindi also. No problem. Okay. Let's start with the presentation. So as Madam has given me my brief introduction. So this was the first slide about me. So I have worked as a product design engineer for 3 years in Rishabh Instrumentation Private Limited in Mumbai. And from there, I have got the ideas for the electrical vehicle technology. So all the vehicles today are using the instrumentation in that. So from that, we are getting the newest technology in the electrical vehicles. So on that, I am doing my research now in the electrical vehicles in National Institute of Technology, Bhopal. So is electrical vehicle a new technology? Absolutely not. Electrical vehicle is not a new concept. As a matter of fact, it has been developed in early 1800s only. But it was not viable to use the electrical vehicle at that time because it was, first of all, it was very costly and low distance, and the technology was not premature. मतलब समझ लो कि पहले के जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल थे बस वो 10 से 20 किलोमीटर चलते थे एंड दे हैव बीन वेरी बल्की, मतलब साइज में बहुत बड़े होते थे वो, एंड technology was not mature at that time. Okay, so after century, मतलब
it has taken a century for electrical vehicle to become a viable option. Q, because of the advance in power electronics and battery technology. As battery जैसे जैसे साइज छोटे छोटे होते गए बैटरी का, and जैसे जैसे power electronics features develop हुई, वैसे वैसे the size of the electrical vehicle was reduced for the consumer use. So power electronics is the key technology for bringing the electrical vehicle with the high performance and reliability. Okay, so इसका main component जो है for using the electrical vehicle today is the power electronics. So this is see one photo here. This was the vehicle that was developed in 1898. This was the first electrical vehicle by Porsche. So after 100 years, we are using this type of vehicles all over the world. So you must have heard about Tesla motors. So these are all the electrical vehicles. So what is the current scenario for the India and for the rest of the world? Okay, Toyota and Volvo are at least all electrical vehicle, or they are a hybrid vehicle. They are going to be hybrid vehicle by 2025. Okay, and Tesla is fulfilling the order like anything. Okay, then what do you mean by hybrid vehicle? So here is the term of hybrid vehicle. Hybrid vehicles means एक vehicle which has a technology of the electrical as well as the IC engine भी रहती है उसमें. Okay, these are called the hybrid vehicles. Hybrid vehicles abhi are developed viable before 5 to 10 years only. But now the current scenario, we have to go all electric. Okay. Now I'll see the second statement. The current Minister for Road and Transportation and Highway of India, Nitin Gadkari sir, has proposed to increase the Nagpur electrical vehicle fleet run by Ola from 200 vehicles to 1000 vehicles till next year. Means अभी समझ लो आप नागपुर में जाओगे and when you will book the Ola, you will find 200 electrical vehicles for the service. Okay, this is 200 electrical vehicles are already running in the Nagpur. Okay, now Lithium Urban Technology, this is the name of the company. Lithium Urban Technologies, it is a Bangalore-based company, run at least 225 electrical vehicles in Bangalore and Delhi. So दिल्ली और बेंगलोर में LUT की बसेस और कार चलती है. ओके, then Ola has launched a pilot project in Nagpur only. They are going to increase the electrical vehicle from 200 to 1000 till next year. Okay, for they are having 200 vehicles now. So in the electrical vehicle, they will be having the 4-wheelers, 3-wheelers, and also the buses. Okay. Now next, Uber. Uber is also the rivalry of the Ola. Has tied up with the Mahindra Motors to operate the E-Verito is the name of their car. This is a very famous car, and E20 electric vehicles in Delhi and Hyderabad by early 2021. So this is the current scenario for the India. Next. So this will give you the rough idea. So 2-wheeler electrical, we are having 3.5 million. 1 million means 10 lakh. Okay. 0.2 million is the e-rickshaw. Rickshaw देखे होगे आपने? E-rickshaw, that is 2.2 million. And कुछ हजारों में you are using the cars. Okay. So this is a very 1 to 2% of all the vehicles we are using in India today. So government is planning to become all electrical by 2030. Okay. So this is the electrical vehicle control. अभी ये थोड़ा technical है. So what is electrical vehicle में क्या? What are the components? Electrical vehicle is very simple as compared to the IC engines. Electrical vehicle किसी ने देखा है? If anyone has seen electrical vehicle, please respond me in the chat. Okay. Okay. Okay, I have got the answer from the Rishabh and Shyam. They have seen electrical vehicle. Okay. Sneha also responded that she has seen 2-wheeler electrical vehicles. Okay.
So Sneha, are you using the have you seen or driven a two-wheeler electrical vehicle? Okay, you're not. But if you have seen the electrical vehicle, at least two-wheeler, it is not creating any kind of noise. Have you seen that as compared to two-wheeler? Okay. So participants are very active here. They are giving the answers. Thank you. Thank you for your response, everyone. Okay. Okay. Thank you. Thank you for your response. Okay. Let's move with the presentation here. हाँ. So इसमें main component as per electrical vehicle is the electronics controller. अब electronics controller में होते हैं सब electronics के parts. You must have seen starting from the transistor to IGBT. They are using everything to control the electrical vehicles. Means पहले जो vehicles रहते थे उसमें all were the mechanical. Okay. Now अभी use कर रहे all are the electronics parts. So अगर if you are becoming electronics engineer, then you should know each and every characteristics of every switches. Okay, क्योंकि future है, future is electrical vehicle only. आप अगर इंजीनियरिंग करके बाहर निकलोगे, you will tackle with electrical vehicles in some company or the another. ठीक है. अभी आप देखे होंगे last 6 months में 6 startups are related to only electrical vehicles. Okay, by the time you will graduate, you will flooded with you will be forced to work with the electrical vehicles only, क्योंकि उसमें सब पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है उसमें. Okay, so now let us see what is this. So electrical vehicle चलती है बैटरी से. घर पे आप इन्वर्टर होगा आपके, जैसे इन्वर्टर चलता है घर का, वैसे ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलती है बैटरी से. ओके. सो मेन कंपोनेंट इज द इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर. इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर मेन कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिकल मोटर को. ओके. सब कंट्रोल इलेक्ट्रिकल व्हीकल. इलेक्ट्रिकल व्हीकल, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल हियर. सबसे पहले होती है मेन बैटरी. इस तरह से बैटरी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की. ओके. बैटरी को चार्ज करने के लिए रहता है चार्जर. ये सीन मोबाइल चार्जर वैसे ही रहता है. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल चार्जर. ओके. देन दिस इज द इलेक्ट्रिकल मोटर हियर. आप देख रहे हैं कि नहीं पता नहीं. हियर मोटर. ठीक है. मोटर इज नॉट ए मेन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल. मोटर का जो कंट्रोल करता है कंट्रोलर मीन्स देयर कॉलिंग एज द इन्वर्टर. इन्वर्टर इज द मेन पार्ट ऑफ द मोटर. मीन्स वी कैन से दैट इन्वर्टर इज द हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल. ठीक है. और इन्वर्टर में है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस. एंड इफ यू आर वेरी स्ट्रांग विद द स्विचेस यू कैन अंडरस्टैंड द इन्वर्टर वेरी इजीली. मीन्स आपको अगर या फिर ट्रांजिस्टर या आईजीबीटी या मॉसफेट का अगर वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट हाउ द इन्वर्टर वर्क. ठीक है. सो बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू इन द फ्यूचर यू वांट टू वर्क इन द इलेक्ट्रिकल व्हीकल. नेक्स्ट. सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल इलेक्ट्रिकल मशीन. ये इलेक्ट्रिकल कार की मेन मशीन है विद ट्रांसमीटर. ठीक है. अब इसमें दिस इज द मोटर एंड ट्रांसमीटर. इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई ज्यादा पार्ट नहीं है बिकॉज ये व्हीकल को रन कर रहा है. ओके. दिस इज द सिंपल मोटर. ठीक है. इसको कंट्रोल करने के लिए वी नीड ए इन्वर्टर. नेक्स्ट. सी नाउ दिस इज द इन्वर्टर. Now this is the main heart of the electrical vehicle. अब इसमें देख रहे होगे आप ऊपर से everything is electronics here. You can see ICs, you can see switches. Okay, everything. If you are good in electronic switches and you are knowing the circuits very well, you can easily find out the working of how the inverter works. It's very simple. But your basics should be very strong for this. ठीक है. तो इन्वर्टर मीन्स डीसी टू एसी कन्वर्टर इज द हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल. मीन्स आपको स्पीड कम करना है, ज्यादा करना है, मोटर को स्टॉप करना है. सो एवरी कमांड, एवरी एल्गोरिथम विल गो थ्रू द इन्वर्टर. ओके. नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेस्ला. आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द टेस्ला मोटर्स. टेस्ला मोटर के बारे में किसी ने सुना होगा तो प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट. Okay, Shyam. Okay, can anyone tell me who is the owner of the Tesla Motors?
Neha, thank you for the response. Anyone knows who is the who also? Oh, okay, yes, but what is the name of the person? Thank you, Sneha, for the answer. She has given the right answer. So Elon Musk owns the Tesla Motors. Okay. See, this is the outer ear of the means this is the zero noise machine. जैसे आप फोर व्हीलर में जितना नॉइज आता है ना, एज कम्पेयर टू दैट इसमें दिस इज द जीरो नॉइज मशीन, दे आर कॉलिंग इट. नॉइज ही नहीं आता है इसमें. सो व्हेन यू ओपन द मोटर, सॉरी व्हेन यू ओपन द कार, ये दिखेगा आपको. ओके, थैंक यू श्याम, थैंक यू प्रतीक्षा फॉर द आंसर. थैंक यू. यस, राइट, करेक्ट आंसर. ओके, थैंक यू. हाँ, सो वी विल सी, वी कैन सी हियर. देखो अभी मोटर अगर आप ऊपर से खोलोगे तो इतना ही पार्ट दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में दिख रहा है, दिस इज द इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसमिशन. ओके, ये बीच में जो स्पेस दिख रहा है, दीज आर हैविंग द बैटरीज. इतनी बड़ी बैटरीज रहती है. ओके, दिस इज हैविंग, इसमें ही इन्वर्टर और इसमें ही मोटर है आपका. दैट्स इट. इतना सिंपल कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का. नथिंग इज नीडेड, नो गियर्स, नो क्लच, ओनली एक्सीलरेटर इज देयर. Okay, by controlling the escalator, by controlling the inverter, we are controlling the motor. Okay, and everything is controlled by electronic switches only. Next, so advantage क्या है? अगर इतना है तो इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहले इट इज cheaper to operate, मतलब ऑपरेशन कॉस्ट काफी सस्ता पड़ता है इसका. ओके, मेंटेनेंस ना के बराबर है. मीन्स इट इज हार्डली हैविंग एनी मोर पार्ट्स. तो ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं इसमें. नो ऑयल चेंज, ऑयल चेक करने की जरूरत नहीं है. और मीन्स वॉट एवर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग विद द आईसी इंजन जो अपन नॉर्मल का यूज करते हैं, उसके हिसाब से द मेंटेनेंस इज वेरी सस्ता. ओके, दिस इज द एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्सो. मतलब अगर इफ इट इज नॉट इमिटिंग एनी काइंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, so it is very friendly. It is also having the health benefit, is also having the safer. Okay, so these are the key electronics, power electronic switches that is used for the inverter. So देखो और बताओ, जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट है ये कौन सा स्विच है? कोई बता सकता है क्या? एनीवन प्लीज टेल एनी गेसेस. फर्स्ट स्विच कौन सा है? तीनों दिख तो सेम रहे पर ऑल आर डिफरेंट स्विचेस. कैन एनीवन टेल मी सबसे लेफ्ट वाला कौन सा है? ओके, श्याम हैज गिवन द आंसर MOSFET. आई एम आस्किंग अबाउट द एक्सट्रीम लेफ्ट. MOSFET is one of the switch in that, but extreme left वाला MOSFET नहीं है. Anyone knows the answer? How will you identify? IGBT भी है इसमें पर extreme left वाला IGBT नहीं है. Anyone? How you identify it is MOSFET और IGBT? कैसे पता चला आपको? How will you identify a particular IC is what? On basis of what you will identify? Because बाहर से देखो तो तीनों तो सेम दिख रहे हैं. All having the emitter base collector. Dots. Dot is used for representation of emitter base collector. So you will identify what kind of switches it is on the basis of the serial number it is given on the that particular device. पहले से serial number देखो C1061. This is the BJT transistor, bijunction transistor का है. Second आप देखोगे FFF4 and N60. This is the serial number for the MOSFET. और थर्ड वाला जो है that is given, लिखा है उस पे IGBT. Okay, so on the basis of the series you are going to identify a particular device is what. ठीक है, अब सब डिवाइसेस को आप नंबर सीरियल नंबर तो याद नहीं कर सकते. टेक द डिवाइस, गूगल करो उसको. इफ यू आर गूगलिंग द सीरियल नंबर IC1061, it will directly give you that it is a bijunction transistor. Okay, so this is the basis of the inverter. इन्वर्टर इसी पे काम करता है. These are the basic switches. Okay, अगर आपको ट्रांजिस्टर, MOSFET एंड IGBT
का means characteristics पता है. Characteristics means voltage and current characteristics. You can easily draw the working of the whole inverter. Okay. So can anyone tell me the full form for MOSFETs? ये बता सकता है? Yes. Anyone? MOSFETs or IGBT का full form? Anyone? Okay, Shyam, thank you for the answer. You are correct. Metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, thank you. IGBT is the okay. Rishabh, thank you. Correct answer. Yes, correct answer. Okay. Pooja, yes, correct answer. Thank you. And anyone knows the IGBT? IGBT is insulated gate bipolar transistor. Everything, all the devices are transistor only. Okay. Some are current control, some are voltage control. मतलब switches का on off जो होता है, कुछ switches का current से होता है, कुछ switches का voltage से होता है. Yes, Shyam, correct. Insulated grade bipolar transistor. Correct answer. Thank you. So some are current control device, some are voltage control device. घर पे जो इन्वर्टर यूज करते हैं हम, उसमें रहता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. ओके. अगर बिग इंडस्ट्री में जाओ या कुछ अलग एप्लीकेशन है आपका, तो दे आर समटाइम दे आर हैविंग द करंट कंट्रोल डिवाइस. ओके. नेक्स्ट. सो मोटर्स कौन सी यूज होती है इलेक्ट्रिकल में? दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट तो हो गया. तो जिसको कंट्रोल करना है मोटर, कौन सी मोटर रहती है? यूज टू एटलीस्ट नो द नेम्स. ओके. ब्रशलेस डीसी मोटर यूज करते थे, पर दैट इज आउटडेटेड नाउ. ओके. सेकंड, इंडक्शन मोटर, परमानेंट मैग्नेट, पीएमएसएम यूज करते हैं, स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर. ओके. सो बीएलडीसी तो आउटडेट हो गया. पीएमएसएम भी, दिस इज ऑल्सो गेटिंग आउटडेटेड, एंड ये भी अभी पुराना हो गया है. ऑल आर वेंडर्स आर यूजिंग द एसी इंडक्शन मोटर. एसी इंडक्शन मोटर का दैट इज द एडवांटेज इज दैट अगर एसी इंडक्शन मोटर के मैन्युफैक्चरर्स काफी है, मतलब एसी इंडक्शन मोटर इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 150 ईयर्स. जो फैन में और जहां जनरल मशीन में आप यूज करते हैं, इंडक्शन मोटर ही यूज करते हैं. ठीक है. पीएलडीसी मोटर, पीएमएसएम, एसआरएम, ये तो अभी 10-20 साल पहले है. तो इंडक्शन मोटर इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम 150 ईयर्स. सो इफ यू गो टू एनी वेंडर एंड यू विल से हमको इस तरह की मोटर बना के चाहिए, देन ही विल इमीडिएटली गिव यू दैट काइंड ऑफ मोटर. Okay, but if you will go to the vendor and you will ask for particular PMSM for the car, then he will charge you extra. ज़्यादा पैसे लेगा. But if you are going for induction motor, you will get variety of options for the motor. So अभी आजकल सभी induction motor, we are using the induction motor. Okay, next. So why are the electrical vehicles important for the India? Okay, so अभी क्या, if you have seen the pollution in India, in the top 15 countries, India is having the top 15 cities in the world. India is having the 11 most polluted city in the world. पूरी दुनिया में सबसे polluted city in top 15 11 इंडिया के हैं. So India should move to electrical vehicle immediately. Okay, theoretically. Because it will not be also luxury, but the survival of the people also. Okay, it is only solution for the green source and transmission of energy. ठीक है. अब ये बोलने में तो काफी आसान लगता है, but what is the issue for the electrical vehicles? सबसे पहले, are the Indian people ready? Okay, so when you will see an survey about the Indian people, they are most the price conscious market. Price conscious market means the Indian people will see कि सस्ती गाड़ी कौन सी मिल रही है, rather than they are convincing about the environment. Okay, then they will see the cost of ownership, vehicle quality तो बाद में देखेंगे. सबसे पहले देखेंगे कि सबसे सस्ती गाड़ी कौन सी मिल रही है. Okay, so what can we do? They may be able to understand the technology to power an electrical vehicle, so the energy is already available. Means let me tell you, in Germany there are some electrical vehicles which are getting charged with the solar power. Okay, solar power से ही vehicle charge हो रहा है,
and they are driving at least 100 kilometers by using the solar power. ऐसी already technology है. Okay, and there will be the options for charging the electrical vehicles at home. So government will taking care of the fast charging station along with the highways. And okay, if you are having the electrical vehicles, then आप तो electrical vehicle तो घर पे charge कर लोगे आप. But if you are going for the long distance, means you are going from Yavatmal to Nagpur, then you will need some charging station in between, so that बीच में गाड़ी बंद ना पड़ जाए. So in this situation, the government should take care of the fast charging station. जैसे पेट्रोल पंप रहते हैं रास्ते पे, वैसे there should be also having the charging station at the every spot in the highway. Okay. So now the government is working in the direction very well. While the government is aiming to shift electrical vehicles 100% electrical vehicles by 2030, infrastructure and consumer awareness is not ready. Major shift, मतलब government is targeting to be 100% electrical vehicle in 10 years. Okay, in 9-10 years, government को पूरा plan है कि we have to go 100% electrical vehicle. But Indian people are not ready. Means we have to make aware, and we have to do specific investment for the charging infrastructure. लोग डर रहे हैं that what will we do अब हमारी गाड़ी अगर बीच रास्ते में बंद पड़ गई तो how will we charge the vehicle? Okay, these are the major problems. So challenges. Okay, first, inadequate charging infrastructure. Just now I have told that charging infrastructure, especially in India, has not yet developed here. मतलब अगर आप if you go to Sweden, their charging infrastructure is at every 1 kilometer. हर एक किलोमीटर के बाद चार्जिंग स्टेशन दिया है. जैसे पेट्रोल पंप रहते हैं ना, वैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव डेवलप्ड इन द स्वीडन ऑलरेडी. ओके, reliance on battery import. The problem with the India is that we are heavily dependent on China for the batteries. जो भी बैटरीज आप देखते होंगे व्हीकल में, वो सब चाइना से इंपोर्ट होके आ रही है इंडिया में. ओके, नाउ वी हैव टू मेक सेल्फ रिलायंस फॉर द बैटरी इंपोर्ट. ओके, उसके बाद जो कंपोनेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मीन्स वॉट एवर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यू आर यूजिंग, वो भी चाइना से इंपोर्ट होके आ रहे हैं. सो वी हैव टू ऑल्सो बिकम सेल्फ रिलायंट ऑन इट. ओके, instead to like local manufacturing. I have told you that we have to be emphasis on the local manufacturing. Raise anxiety among the consumers. The consumers should be made aware that government is going to help to give the subsidy if you are going for the electrical vehicle. Okay, electrical vehicle are always costly. Means the now electrical vehicle, if you are going to buy the electrical vehicle, the cheapest one is of 9 lakhs. 9 lakh की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिकल व्हीकल आज मार्केट में अवेलेबल है. ओके, महिंद्रा की है वो. सो लैक ऑफ ऑप्शंस फॉर द हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिकल व्हीकल. इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिकल सप्लाई इन पार्ट्स ऑफ इंडिया. सो वी हैव सीन दैट कुछ इंडिया के पास में अभी भी बिजली पूरी तरह से पहुंचा नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो दूर की बात है. ओके, लैक ऑफ क्वालिटी मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑप्शन. तो अगर आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कहीं खराब हो गई, तो आप उसको कोई भी शॉप में ले नहीं जा सकते, क्योंकि बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज न्यू एंड द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. सो वो रिपेयर ही कैसे करेगा. सो वी हैव टू मेक सर्विस स्टेशन ऑल्सो इफेक्टिव. ओके, इफेक्टेड बाय ब्रॉडर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टर्न डाउन. तो इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पूरी, दे हैव टू एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, देन द कंज्यूमर विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रिकल व्हीकल. So these are all the very much challenges in India. But let me tell you, the electrical vehicle technology is already booming in the European market. As I have told you already, Sweden is going 100% electric vehicle this year. So this is the charging infrastructure for Tesla Motors. Tesla Motors में at every office they have installed this kind of charging structure. This is the charger. आप अगर काम पे जा रहे हो तो घर से थोड़ा चार्ज करके निकलो, यू पार्क द व्हीकल इन द पार्किंग लॉट, देन यू अगेन चार्ज इट, उसी को लेके घर पे चलिए. ओके, सो दिस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी डेवलप इन द कंट्री. दिस इज द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. अब आप देखोगे अगले इन नेक्स्ट 5 to 10 years, इन नेक्स्ट 5 years you will see such type of charging infrastructure at every corner of the country. मीन्स अब डेवलप सिटीज में तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है ये, और अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये शुरू हो सकता है इन नेक्स्ट 5 years ओनली. तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी.
कि फ्यूचर में क्या होने वाला है एंड हाउ वी हैव टू अपग्रेड इन इट. ओके, यू हैव टू नो हाउ इट इज चार्जिंग, हाउ इट इज डिस्चार्जिंग, कैसे काम करता है. एटलीस्ट यू शुड हैव अ रफ आइडिया एज ए इंजीनियर. So this is again, this is of Sweden. Okay, this is also of Sweden. If you are going for the shopping, then गाड़ी पार्क कर दो, चार्जिंग लगा दो और शॉपिंग करने के लिए चले जाओ. You will have at least 5 to 10% charge when you come from the shopping. So this option should be available with the customers. So इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है टाटा मोटर्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक है, हुंडई है, हीरो इलेक्ट्रिक की 2-व्हीलर व्हीकल्स है, किया मोटर्स एंड अशोक लेलैंड इज वर्किंग ऑन द बसेस. ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. every electrical company is working the R&D on the electrical vehicles only. Government is pushing to work in the R&D for the electrical vehicles. ये है महिंद्रा इलेक्ट्रिक की ई वेरिटो. इज अ वेरी फेमस कार. अगर आप दिल्ली में गए तो आपको ओला के लिए यही गाड़ी मिलेगी आपको. दिस विल कम टू पिक अप यू. सो ऑलरेडी ओला, नागपुर ओला है चार्जिंग स्टेशन. अगर आप अभी नागपुर में जाओगे तो आपको चार्जिंग स्टेशन ऐसे मिल जाएंगे. देयर द ओला इज हैविंग द चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल बसेस. ओके, तो ये समझ लो दिस इज द फ्यूचर ऑफ द इंडिया. आपको ऐसे ही मिलेगा. ऑल द पेट्रोल पंप विल गो टू एक्सटेंड इन नेक्स्ट 5 to 10 years. So you have to upgrade yourself according to that. Okay, how it is charging and what are the advantage. कितने वोल्टेज पे चार्ज हो रहा है. ज्यादा वोल्टेज दिया तो बैटरी फट तो नहीं जाएगी. अगर ज्यादा चार्ज किया तो बैटरी को कोई नुकसान तो नहीं है. यू शुड नो ऑल दिस एस्पेक्ट. ओके, नाउ दिस इज द बैंगलोर BESCO चार्जिंग स्टेशन. तो इंडिया में कुछ जगह पे ऑलरेडी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है. ओके, ऐसा नहीं कि दिस इज द फ्यूचर टेक्नोलॉजी. जस्ट पीपल आर गोइंग टू एडॉप्ट स्लोली पीपल आर गोइंग टू एडॉप्ट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द कंक्लूजन. The implementation of electrical vehicles in India aims primarily to reduce the greenhouse gas emission and cut oil expenses. Okay, this first line is a self-explanatory. No need to explain that. Vision 2030 put forward by the government of India is an ambitious and difficult task. Difficult है, but that is possible if the government gives subsidies. आपने ये सुना होगा उजाला योजना गवर्नमेंट की. So Ujala Yojana, what they have done, they have given 100% LEDs to every village in the country. ट्यूबलाइट जो थे ट्यूबलाइट्स उसको रिप्लेस किया LEDs से, and that is a very successful. And then government should also come forward for the electrical vehicle technologies also. जैसे आपने देखा होगा, पता नहीं आप देखा कि नहीं, पहले STD और PCO होता था पहले फोन करने के लिए, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मोबाइल्स. So इसी तरह से गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन एट एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी. जैसे STD PCO होता था, इसी तरह से चार्जिंग स्टेशन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंस्टॉल. ओके, so Indian ambition towards the many environmental friendly agreements has given situation where it is promoted to implement Vision 2030. What is Vision 2030? Vision 2030 is the India going all electric vehicles. अगले 10 सालों में आपको रास्ते पे से इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही मिलेंगे, ऐसा विजन है इंडिया का. And government is working very aggressive on that part. And as an engineer, you should know every aspect of the electrical vehicle. At least you should know some how electrical vehicle is working here. Okay, so this is statement 2. Don't confuse schooling with education. I didn't go to Harvard, but the people that work for me did. This is a famous statement by the Elon Musk. So basically he means to say you should not only work on your pointers and grades. You should work extra also to get the skill developed that is required by the industry. कॉलेज सिलेबस में आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, बट द टेक्नोलॉजी इज फ्यूचर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओनली. सो यू शुड टेक इनिशिएटिव टू लर्न अबाउट दैट. क्योंकि इंडस्ट्री में आप जब जाओगे देन दे विल बी आस्किंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल कि आपने क्या पढ़ा है. ओके, एंड ऑल्सो इफ यू गो टू NITs एंड IITs जाओगे आप, 90% ऑफ द रिसर्च इज गोइंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ओनली. सो इफ एनीवन इज प्लानिंग टू गो फॉर PG or PhD, then you should have this topic in hand, because this is the future of the all research in the India.
So that's it from my side. If anyone is having any questions, please ask. If anyone is having any question, they can put their question in the chat box. Yes, for the student side, if you are having any question, please put your question in the chat box. Yes, anyone having any question related to this or any other? Okay, block diagram. So Shyam has asked me the question about explaining the block diagram. So let me go to block diagram. Okay. So this is a bit technical. This is a bit on the electrical side, but still I will explain you. Okay. कार जो रन होती है वो रन होती है बैटरीज से. बैटरीज होती है और एक ऑक्सिलरी पावर सप्लाई होता है. ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन यू. जो बड़ी बैटरी, दो बैटरी रहती है इसमें. ठीक है. ये है बड़ी बैटरी एंड ये छोटी बैटरी. आई थिंक यू कैन विजिबल इट नाउ. ठीक है. ये जो बड़ी बैटरी है, दिस इज यूज फॉर द वर्किंग ऑफ द मोटर. जो इंडक्शन मोटर होती है उसको रन करने के लिए वी आर यूजिंग दिस बड़ी वाली बैटरी. ओके. और कार में जो ऑक्सिलरीज होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल वाइपर, विंडोज, एसी ऑफ द कार, ये सब रन होता है ये छोटी बैटरी के. ओके. दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी बैटरी. तो ये छोटी बैटरी होती है. सो द मेंटेनेंस ऑफ द दिस मेन बैटरी इज लेस, क्योंकि अगर ये बैटरी अगर थोड़ी खराब हो गई देन द एंटायर कार विल बी शट डाउन. ओके. बट ये बैटरी का थोड़ा मेंटेनेंस का होता है, मीन्स क्वालिटी लो होती है. ओके. सो लेट मी टेल यू वन थिंग. इफ यू आर बाइंग द इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ओके, अगर 10 लाख की कार है तो बैटरी का खर्चा उसमें 4 से 5 लाख आता है. बैटरी इज ओनली कॉस्टली इन द इलेक्ट्रिकल व्हीकल. ओके. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, जैसे मोबाइल की बैटरी थोड़ी कम कम हो रही है अभी, वैसे ही कार की बैटरीज भी कम कम होते जाएंगे. देन वी आर गोइंग टू गेट द चीपर कार. ओके. Coming to the block diagram. So this is the battery. Drivers is running for the inverter. Inverter के जो switches होते हैं, switches के on off के लिए we are needing the drivers. Okay. Power converter is the inverter only. Power converter अभी जो inverter दिखाया मैंने आपको, inverter only. और inverter की help से electrical motor run होती है. Electrical motor is going to transmit the power to the wheels. ये motor is transmitting the power to the wheels. तो व्हील्स रोटेट होंगे. दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन यूनिट, जिसमें गियर बॉक्स वगैरह रहता है उसमें. ओके. गियर स्क्रूज रहते हैं इसमें. तो दिस इज द बेसिक, वेरी बेसिक ब्लॉक डायग्राम. इतना भी इजी नहीं रहता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बट फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट. ओके. सो ऋषभ हैज आस्क्ड मी अनदर क्वेश्चन. पेट्रोल, डीजल और चार्जिंग व्हीकल इज बेटर, विच इज बेटर? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. Petrol, diesel or charging? His question is that if we are having the petrol and the diesel vehicle along with the charging vehicle, so among these three, which one will be the better? Okay, got the question. So this was the question what arise to many people. So what they have created a solution to it, क्योंकि electrical vehicle अभी is a developing technology, means matured नहीं हुआ है अभी तक. ठीक है. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑलरेडी रनिंग फ्रॉम द 100 years. तो दे हैव कम अप विद द हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल. हाइब्रिड में क्या होता है कि आईसी इंजन रहता है उसमें एंड ऑल्सो द इंडक्शन मोटर रहता है उसमें. दोनों का यूज करते हैं. ठीक है. बैटरी जो चार्ज होती है आपकी, वो होती है आईसी इंजन. आईसी इंजन से चार्ज हो रही है आपकी बैटरी. ओके. और बैटरी प्रोवाइड कर रहा है सप्लाई टू द इंडक्शन मोटर. सो उसको बोलते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, HEV. इन विच दे आर हैविंग द बोथ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज द मैकेनिकल. ठीक है. विच इज बेटर? अगर तीनों में से अगर बेटर, सबसे बेस्ट आपको चाहिए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज द बेस्ट, बट द टेक्नोलॉजी इज स्टिल डेवलपिंग हियर. श्याम हैज अ वेरी गुड क्वेश्चन. विच बैटरीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कार? पहले तो लेड एसिड बैटरी यूज होता था, बट टुडे ऑल आर गोइंग विद लिथियम आयन बैटरी. लिथियम एक्चुअली इफ इट इज पॉसिबल. Any more questions from the student side?
Okay, Rishabh asked me the question, can we charge electrical vehicle in the rain? Okay, it is the same question, can I charge my mobile in the rain? अगर आप मोबाइल घर पे चार्ज कर सकते हो तब इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी घर पे ही चार्ज कर सकते हो. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल इफ इफ यू आर आस्किंग दैट if it is outdoor and you are charging the electrical vehicle, then how will you going to effect? Okay, that is a very good question. But let me show you the one photo here, charging photo. Okay, if you see here, I don't think is it visible? Yes. Yes, sir. If you see here, so everywhere there is a proper insulation. अगर यहाँ पे बारिश भी गिर जाए, so it is not going to affect your charging, as you can see here. Okay, it is outdoor, but generally India में क्या करते हैं, we are installing everything in shade. Okay, that is a Sweden. देखो अभी इंडिया का बताता हूँ आपको. तो देखो, as you can see here, there is a shade here for charging, as you can see. Okay, so generally charge होता है वो. But if you are having, there are three kind of charger, L1, L2, L3. फास्ट चार्जर और स्लो चार्जर. ठीक है, फास्ट चार्जर में बैटरी आपका चार्ज कर देगा 1 घंटे में. स्लो चार्जर चार्ज करेगा आपका बैटरी इन 8 to 10 hours. So depending on that, you are going to have your charging infrastructure. Rustam is asking, aren't the electrical vehicle dangerous in an accident? Okay, good question. So electrical vehicle is having very minimum amount of the what you can say parts as compared to the IC engine. IC engine में मैकेनिकल पार्ट काफी होता है. अगर आपका एक्सीडेंट हो रहा है, then your percentage of surviving the accident is minimal. And if you are in the electrical car, already all the electrical cars are having the 5-star certification. जब आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल कार का 5-star and their inertia and the safety of the vehicle is already maintained by the manufacturer only. So let me tell you very clear that electrical vehicles are always safe than the IC engine vehicles. So Sham is asking, if I don't use for the 2 or 3 months of the car, then it will work or what? So it depends, Sham. This will depend upon your batteries. ठीक है, तो मोटर तो इंडक्शन मोटर ही है. इंडक्शन मोटर मीन्स आप जो घर पे सीलिंग फैन में यूज करते हो वही मोटर है. अगर 2-3 महीना अगर फैन बन रहा, इफ आपको उसको सप्लाई दोगे तो शुरू हो जाएगा फैन. द प्रॉब्लम कम्स विद द बैटरी. ओके, इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज द बैटरीज फॉर 2 to 3 months, it is generally given that you should disconnect from the supply. सप्लाई से उसको पॉजिटिव नेगेटिव को डिस्कनेक्ट कर दो. इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज द बैटरी, एंड इफ यू आर अगेन गोइंग टू यूज द बैटरी, फिर इसको और कनेक्ट कर दो, अदरवाइज कार्बन जमा हो जाएगा उसके आसपास. सो ऑल द इश्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल कम्स टू बैटरीज ओनली. नेक्स्ट, हाउ कैन आई लिमिट द डिस्चार्जिंग एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल व्हीकल एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम? How can I limit discharge energy from electrical? I don't understand. What do you mean by discharge energy? Rishabh. I did not understand the question. How can I limit the discharging energy from electrical vehicles in energy management system? Discharging energy means what? Yes. Do all electrical vehicles? Yes, Rustam. All electrical vehicles are not having the autonomous driving system, but the latest means बाहर के जो vendors है, for example Toyota, Tesla Instruments, Tesla Motors, so they are having the automatic driving system. Okay. ये automatic driving system is it's a bit technical here, so I think I will not attend this question. काफी टेक्निकल हो जाएगा ऑटोमेटिक ड्राइविंग. दिस द मेन एम ऑफ पीपीटी इज टू गिव जस्ट रफ आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिकल व्हीकल. बट इंडिया में तो ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम नहीं है अभी तक. ओके, सो ऋषभ हैज गिवन अ डिस्चार्ज लिमिट. हाउ कैन आई लिमिट द डिस्चार्ज लिमिट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल व्हीकल? Considering the energy management system, can we
limit the discharging of the battery while we are driving the vehicles. नहीं, you cannot limit the discharging means आप एक लिमिट सेट कर सकते हो कि the battery is having the SOC state of charge. ओके, तो जैसा पेट्रोल में रहता है कि बिलो कुछ रेंज के नीचे वो इट इज गिविंग द रेड इंडिकेटर. ओके, तो बैटरी में भी सेम रहता है. इफ योर SOC इज बिलो 20%, दैट विल गिव यू द रेड इंडिकेटर कि अभी चार्ज कर लो आप. तो बैटरी उसके बाद कम से कम 20 to 30% रन करेगा. और आपने देखा होगा मोबाइल में अगर आपकी बैटरी 20 या 15% से कम आ जाती है तो दैट इट इज गिविंग द इंडिकेशन दैट अभी बैटरी चार्ज कर लो. दैट इज द स्टेट ऑफ चार्ज, SOC. उसी तरह से बैटरी में भी SOC दिया जाता है दैट टू चार्ज इट इज बिटवीन द 50 या 20%. So it is easy to afford. What is the cost of types of car approximately? Is it easy to afford? The cost of electric vehicles. Yeah. Just I have told you that the cheapest car in electrical vehicle in India is a Mahindra ka E-Verito, and that is costing you 10 lakhs approximately, 9 to 10 lakhs. So 9 to 10 lakhs इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और वो रन करेगा आपका 110 किलोमीटर सिंगल चार्ज. अगर आपने उसको रात भर चार्ज कर लिया 8 से 10 घंटा घर पे, और आप उसको चला सकते हो 100 किलोमीटर, ठीक है, तो बाहर गाँव तो ले ही नहीं जा सकते आप उसको. यू कैन ड्राइव इन सिटी ओनली. So just now I have told you that you have to install the charging infrastructure at every station. जैसे पेट्रोल पंप रहते हैं वैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा. ओके, सो नेक्स्ट रुस्तम इज आस्किंग व्हाट अदर न्यू टेक्नोलॉजीज विल इलेक्ट्रिकल व्हीकल ब्रिंग. ओके, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इससे भी न्यू टेक्नोलॉजी. अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज बिटवीन द चार्जिंग ऑफ द बैटरी. ओके, तो मोटर का टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं होगा. जो भी डेवलप होने वाला टेक्नोलॉजी दैट इज ऑन द चार्जिंग. बैटरी का साइज कैसे रिड्यूस करना है, बैटरी को जल्दी से जल्दी चार्ज कैसे करना है, बैटरी जल्दी खराब ना हो जाए उसके लिए व्हाट आर द इफेक्ट. और अगर इफ टुडे सब कार अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, ठीक है, तो आगे 10 साल में जब ये बैटरी खराब हो जाएगी सबकी, तो बैटरी को डिस्पोज कहाँ करने वाले हो आप. आर यू गेटिंग द पॉइंट. इस पे भी रिसर्च चल रहा है कि अगर सब इलेक्ट्रिकल कार्स रन हो रहे हैं तो बैटरी का वैल्यू तो 2 से 3 साल ही रहता है. तो अगले 10 साल में जो सब बैटरी जमा हो जाएंगे पुराने वाले, उसका आप क्या करोगे. ऑलरेडी इट इज हैविंग द लेड. ओके, लेड कंपोनेंट है उसमें, तो इट इज हार्मफुल ऑलरेडी टू द एनवायरमेंट. तो व्हाट इज दैट बैटरी डिस्पोजल. तो जो भी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आएगी वो बैटरी में ही आएगी. हाउ टू रिड्यूस द साइज ऑफ द बैटरी. ओके, कैन Sneha is asking, can all electrical cars be as same as hybrid ones? No, hybrid ones is having the efficiency. अब देखो, आप अगर जो कार अभी देखे हो रास्ते पे, दैट इज IC इंजन का, उसका एफिशिएंसी कितना रहता है, किसको आइडिया है. उसका एफिशिएंसी रहता है ऑलमोस्ट 50 to 60%. मीन्स आप अगर उसमें 100 रुपए का पेट्रोल डाल रहे हो तो उसका आपको वैल्यू मिलेगा सिर्फ 50 से 60 रुपए का. ओके, तो 40 रुपए आपका वेस्ट जा रहा है. दिस इज द कॉल्ड इफिशियंसी. 50 to 60% इफिशियंसी रहता है IC इंजन का. आप अगर हाइब्रिड जा रहे हो उसमें, तो हाइब्रिड पे ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा 80%. देखो, हाइब्रिड में भी आप IC इंजन ही यूज करोगे, ठीक है. बट इफ यू आर यूजिंग द ऑल इलेक्ट्रिक कार, में सब कुछ इलेक्ट्रिक है उसमें, द इफिशियंसी ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक कार इज अबाउट 92%. ओके, टेस्ला मोटर्स है एचयू द इफिशियंसी ऑफ 95%. मीन्स अगर आप उसमें 100 रुपए का अगर बैटरी चार्ज कर रहे हो, 100 रुपए यूनिट से बैटरी चार्ज कर रहे हो, तो आपको उसका वैल्यू मिलेगा 95 रुपीज. तो एज आई हैव टोल्ड यू, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज हैविंग द गुड कॉस्ट फॉर मनी, बट टेक्नोलॉजी इज स्टिल मैच्योरिंग इन इंडिया. अदर कंट्रीज हैव ऑलरेडी एडॉप्टेड द टेक्नोलॉजी. इंडिया में थोड़ा धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, नागपुर में इलेक्ट्रिकल बसेस आ रही है अभी. विद इन 2 years इलेक्ट्रिकल सब बसेस आ जाएगी. आपने देखा होगा स्टार बस रहती है नागपुर में, तो ऑल दैट विल बी रिप्लेस बाय द इलेक्ट्रिकल बसेस इन नेक्स्ट 2 years.
ओके, जो मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं नागपुर में, हर मेट्रो स्टेशन के नीचे चार्जिंग स्टेशन दिया है, जब आप जाओगे तो देख लेना एक बार। ओके, हाँ, if the Rishabh is asking, if the battery blast in electrical vehicle, then it is harmful for human beings, then how it will be beneficial than petrol? Okay, the main component for the electrical vehicle is battery only. ठीक है, जो मेन बैटरी यूज करते हैं ना, उसका पहले सेफ्टी फैक्टर देखते हैं कितना है। जैसे एसओसी रहता है बैटरी में, वैसे उसका सेफ्टी फैक्टर रहता है। इफ द सेफ्टी फैक्टर इज बिलो 0.8, सेफ्टी फैक्टर का रहता है बिटवीन द 0 to 1। इफ द सेफ्टी फैक्टर इज बिटवीन बिलो 0.8, देन हियर दे आर नॉट यूजिंग दिस काइंड ऑफ बैटरीज। ओके, तो बैटरीज ब्लास्ट कब होगी? व्हेन यू आर ओवर चार्जिंग इट। अगर चार्ज ज्यादा हो गए तभी बैटरी ब्लास्ट होगी। बट इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कभी भी एसओसी 100% चार्ज नहीं करते वो लोग, दे आर चार्जिंग टिल 95%, उसके बाद सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है आपका। सो बैटरी ब्लास्टिंग का तो अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं आया, बिकॉज सेफ्टी फैक्टर को ही लेके चलते हो। बैटरी ब्लास्टिंग, इंडक्शन मोटर ब्लास्टिंग के जो सब सेफ्टी फीचर्स का यूज करके उसको 5 स्टार रेटिंग देते हैं कार को। ओके, स्नेहा इज आस्किंग, सर देन व्हाई so then we can say that electrical vehicle better than hybrid car. Electrical vehicles are always better than, yes, because efficiency of electrical vehicles is 90 to 95% than the hybrid car. So hybrid cars तो अभी भी यूज हो रहे हैं, means this is a very old technology. You can say that 5 या 6 सालों से hybrid electrical vehicle यूज हो रहे हैं दुनिया में, but the technology is to go all electric. एक सिंगल बैटरी रहेगी उसमें, एक सिंगल मोटर रहेगी और उसको पूरा उसको रन करेगा इंडक्शन मोटर। सी लेट मी टेल यू वन थिंग, जितनी सिंपल टेक्नोलॉजी रहेगी उतना उसका उतनी कॉस्टली रहेगी वो। आर यू गेटिंग? आईसी इंजन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू कैन गेट द आईसी इंजन इन 1 लाख रुपीज ओनली। पर जितना आप टेक्नोलॉजी को सिंपल करोगे उतनी ही टेक्नोलॉजी महंगी होती जाएगी, कोई किसी भी फील्ड में देख लो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन asked by Sneha, I have answered that. Any other question? Very good questions you have asked here. I think students have got many answers of their questions. Okay, thank you Risha for And asking the question. Thank you Shyam for participating. Yeah. Thank you Pratiksha. Student got a better knowledge about this electric vehicle and the related technology of that one. Even student has also participated more in the question asked, the Rishabh, the Sneha, the Sham, all the students. I take this privilege to have a vote of thanks by the presentation side. I am very thankful to the Secretary of the Jagadambha College of Engineering and Technology, Dr. Sheetal Vatile sir, along with the Principal sir, Dr. H.M. Baratkar sir, for their continuous support for driving the online case lecture for our students. I am very thankful to the head of the department, Professor V.K. Barbudhe sir, for their initiative on this online case lecture, along with the coordinator, V.R. Thakre sir, all the team members of the Electronics and Telecommunication Engineering Department, and very much thankful to Professor Siddhant Gudhe sir that he has given his valuable time to guide our students on the electrical vehicle, where they are getting more clear structure about the prospects and the challenges in the India related to the electrical vehicle. Again, on behalf of the Department of Electronics and Telecommunication Engineering, Jagadambha College of Engineering and Technology, I am very much thankful to all the students, those who have actively participated for this online case lecture. And thank you very much. This is over from the presentation side. Thank you, madam. Thank you. Yeah.